Chaos 3 की स्टोरी स्टार्ट होती है विद अ जापानीज कार्गो शिप जिसे येलो सी में नॉर्थ कोरियन एंड चाइनीज सोल्जर्स ने ब्लॉक करके रखा है। दावा करा जा रहा था कि ये सब एक्चुअली मोटिवेटेड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ISDF एंड दैट कि उसकी फॉर्मेशन वायलेशन है पोस्ट वर्ल्ड वॉर कॉन्स्टिट्यूशन की। इस पॉलिटिकल टेंशन को देख जापान का एलाय यूएस से NSA के थर्ड एशेलॉन कम्स इनटू द सीन एंड अपनी मोस्ट एडवांस्ड वॉरफेयर शिप येलो सी में डिप्लॉय करता है in order to push North Koreans and Chinese away. इसी बीच हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सैम फिशर को अपना पहला ऑब्जेक्टिव मिलता है and that is to rescue Morgan Hood from a lighthouse in Telara of Peru. ब्रूस एक्चुअली एक अमेरिकन प्रोग्रामर है जो मास एल्गोरिथम को डिक्रिप्ट करने का काम कर रहा था। To all of this, Chaos 3 की स्टोरी feels like watching a spy thriller with a good sense of politics involved. I found the plot to be pretty enjoyable and interesting, but the best part is it achieves that without getting in the way of gameplay or overuse of cutscenes. And yeah, this is the story side of. Huh? Who broke the lights? Oh, hey. By the way, it was just nothing but 1 year out of warranty and things start screwing up. Khair. Now let me get this right out of the way. Chaos Theory is one of the best, if not the best stealth game ever made. This has to be the most tactical, intense and satisfying stealth has ever been. Game at first starts with a very linear mission just to help you learn all of its major mechanics, but जैसे जैसे तुम progress करोगे, levels open up होते जाएंगे with a lot of interconnected rooms that encourages you to experiment with the stuff, choose which route are you gonna take to complete your objective, and to further solidify it, you have stealth mechanics that are nothing short of perfection. Talking about it, इस गेम का stealth has 4 core fundamentals that players need to be familiar with in order to progress, and that are environments, lighting, patience, and enemy behavior. सबसे पहले हम बात करते हैं environments की, and just like any other stealth game, Splinter Cell requires you to take full advantage of your surroundings. Each level in this game is like a giant claustrophobic playground encouraging player to take full advantage of whatever he finds. कई areas में random objects scattered होंगे that can be pretty helpful in distracting the enemy. वहीं दूसरी areas can have pipes allowing you to hang from the ceiling and grab enemies' neck from above or shoot them, while others can have too much claustrophobic environments allowing you to do a split jump and surprise them with a slight bonk to the head, or be the nice little guy and observe them from the cover of the wall. Also, to further encourage player to make use of their surroundings, game also will have a lot of extra objectives, so you will find yourself exploring the heck out of these environments. Player के पास सबसे पहले अपने primary objectives that are the main part of the mission and are compulsory to complete. इसके अलावा you also have extra objectives that are of 3 types, namely secondary, opportunity and bonus. Now secondary objectives ऐसे objectives हैं जिन्हें तुम अगर एक मिशन में complete नहीं करते हो तो they will add up as primary in the next one. Opportunity objectives are the one needed for a better rank, whereas bonus objectives are the one for the completionist and don't serve any major purpose. Due to which तुम्हें हर एक लेवल के हर एक रूम हर एक हॉलवे को thoroughly explore करना पड़ता है, so you don't miss out on anything. Also, player की environment के साथ interaction बढ़ाने के लिए designers provided you with a great set of tools, which is where our next fundamental comes into the play. The lighting. Talking about it, lights ना सिर्फ सैम की सबसे बड़ी दुश्मन बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। इस गेम में how you interact with the lighting and how good you are at manipulating it determines how skillful of a spy you are. तुम जितना लाइट में रहोगे उतना ही हाई चांसेस है ऑफ यू गेटिंग स्पॉटेड, सो योर ओनली ऑप्शन इज टू हाइड इन डार्कनेस, एंड अगर डार्कनेस प्रेजेंट नहीं है यू हैव टू क्रिएट इट. योर ट्रस्टी पिस्टल इज इक्विप्ड विद OCP AKA ऑप्टिकली चैनल्ड पोटेंशिएटर, जो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कुछ टाइम के लिए मैनिपुलेट करने के काम आ सकता है, जिसकी वजह से तुम कुछ टाइम के लिए लाइट्स को डिसेबल कर सकते हो. बट नॉट ओनली एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड है, बट ऑल्सो इट टेक्स सम टाइम्स टू रिचार्ज, सो यू कांट मैनिपुलेट मल्टीपल रिसोर्सेज विदाउट लूजिंग सम सेकंड्स. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो शूट द लाइट रिसोर्स, बट नॉट ओनली इट विल कंज्यूम योर प्रेशियस एमो एंड मेक अ लॉट ऑफ साउंड, but also if you miss, there is a high possibility of blowing away your cover, or you can turn them off with a switch. But क्योंकि switch generally lies in the enemy territory, there is a certain risk to it. इसके अलावा you also have other items to further interact with the environment, like scanner that allows you to hack devices from a distance. And क्योंकि for most of the time you will be in the cover of darkness, you are provided with Sam's iconic goggles having 3 separate modes, namely night vision that allows you to see in dark, thermal vision allows you to spot enemies from a distance, and EMF vision reveals every electronic devices in your vicinity. You also have a noise and visibility meter in the bottom right corner, thereby informing you of how much sound you are making or how visible you are. But yeah, ये सब तो ठीक है. No stealth game is a stealth game without the patience. And while talking about it, this game requires it a lot and totally rewards you for being patient. ये चीज तुम्हें फर्स्ट मिशन के फर्स्ट कॉम्बैट इनकाउंटर में ही क्लियर कर दी जाती है. You see, अगर तुम इस एरिया में फर्स्ट गार्ड को ब्रिज क्रॉस करते ही पकड़ लेते हो, there is a high chance that second guard will catch a glimpse of you. But if you wait a little longer, पहला गार्ड being on the side of cliff becomes an easy target, and second guard अपनी पेट्रोल पे वापस चला जाता है. Therefore, no one is alerted. सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ पर दूसरी गेम्स में it's like wait for him to turn around, approach him from behind and bam. Chaos Theory में however,
The way you approach him also matters. तुम माउस व्हील की हेल्प से सैम की मूवमेंट स्पीड चेंज कर सकते हो एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्लो यू अप्रोच देम यू विल हैव लेस चांसेस ऑफ गेटिंग स्पॉटेड, व्हिच मेक्स स्नीकिंग अप टू एनिमी far more intense and satisfying. I mean, yeah, you can shoot guards from a distance, but not only it will alert all the nearby enemies, but will also not reveal any valuable information they might be aware of. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम एनिमी से इंटरेक्ट करने के बजाय उन्हें चुपचाप स्टॉक एंड फॉलो करते हो, तो some of them might even lead to some valuable item or important piece of information. And अगर हम guards की बात कर ही रहे हैं, तो now let's talk about their AI, which is actually pretty well done. These guys will react to every stuff. And I seriously mean every stuff you move or manipulate in the environment, whether it be breaking, flickering, turning off the lights, some of the doors that suspiciously open, or even the body of their comrade who has either been killed or knocked. Not only that, they will also react to even very small details like creaking of the wooden floor, catching a very small glimpse of you in the camera, shutting off a door a bit too hard, or even getting their device hacked. And just like any other stealth game, they have 3 phases of alert. पहले आता है suspicion phase when they are suspicious of spotting someone, फिर आता है search phase जहाँ पे they will go on patrol for further investigation, and lastly comes the combat phase जहाँ पर they spot you and start open firing, or if an alarm is close by they will rush towards it to alert the whole outpost, जिसके बाद everyone will come equipped with a better equipment. In addition to that, तुम्हें ढेर सारे तरीके भी प्रोवाइड करे जाते हैं to take them down. जब तुम कोई भी मिशन स्टार्ट करते हो तो उससे पहले तुम्हें लोड आउट के 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं. सबसे पहले आता है स्टेल्थ गियर विच इज स्टिल योर गो थ्रू लोड आउट, जहां पर भले ही तुम्हें बुलेट्स कम मिलती हैं बट एनिमीज को स्टन करने के लिए आइटम्स ज्यादा, लाइक एयर फॉलोअर्स जो कि एनिमीज को नॉक करते हैं व्हेन शॉट एट देयर हेड, स्टिकी कैमरा जो कि एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट एंड गैस की हेल्प से बेहोश करने के लिए काम आता है, स्टिकी शॉकर एनिमीज को एक हिट में इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू हिट देम उन्हें स्टन कर देता है, एंड गैस ग्रेनेड जो कि लार्जर रेंज में गैस रिलीज करके एनिमीज को स्टन कर देता है. दूसरा लोड आउट है असॉल्ट गियर जो कि गन्स की ज्यादा एमओ एंड ऑल द फेटल ग्रेनेड्स इंक्लूड करता है, लाइक शॉटगन एंड स्नाइपर राइफल अटैचमेंट दैट टर्न्स असॉल्ट राइफल इनटू अ शॉटगन और स्नाइपर राइफल रिस्पेक्टिवली, एंड फ्लैश, फ्रैग, स्मोक ग्रेनेड्स एंड वॉल माइंस. Lastly comes the reading gear that is a perfect balance between the two. बाकी इसके अलावा अगर तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करो तो तुम एनिमीज के पास जाके राइट माउस बटन की हेल्प से उन्हें पंच टू द फेस के साथ नॉक कर सकते हो, या फिर लेफ्ट माउस बटन की हेल्प से उन्हें नाइफ से स्टैब कर सकते हो. बाकी अगर तुम इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहो तो तुम विसल की हेल्प से ऐसा कर सकते हो. एंड यहाँ पर मैंने मेजॉरिटी ऑफ द चीजें कवर करने की कोशिश करी है. एंड बिफोर रैपिंग अप दिस पार्ट, let's summarize and take a look at every level. सबसे पहला मिशन है लाइट हाउस that is a pretty linear level and overall serves a good tutorial level. Then आता है कार्गो शिप जहाँ पे चीजें थोड़ी सी ओपन अप होती हैं, तुम्हें अलार्म सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा जाता है, but in terms of layout it can get pretty messy and hard to remember. फिर आता है the bank, easily the best mission in the entire game thanks to its open nature. Immediately followed by the penthouse, second best mission in the game. फिर आता है Displaced International which is good but not anything great. Same goes for the next one, Hokkaido. फिर आता है The Battery, one of the finest missions in the game, immediately followed by the worst mission in the game, Seoul. ना सिर्फ ये linear है, but set pieces make stealth so annoying, which again is followed by the second weakest mission, the Bathhouse, which although starts pretty solid, but ends with the weakest section in the entire game. But hopefully the next and last mission called Kokobu Sosho ends the game on a solid note by being one of the finest mission in the entire game. In fact, अगर मैं missions को rank करूं तो list कुछ ऐसी बनेगी. And yeah, this wraps it up. And अगर तुम में से कोई लोग सोच रहे हैं कि what about the flaws, तो वो इस वजह से mention नहीं करे गए हैं because I can't really think of any, except for the obvious ones being bad set pieces जो मैंने mission 8 और 9 को summarize करते हुए discuss करे हैं, and how you can reload and save at any moment, which I do understand the importance of, but it does sacrifices the challenge. So yeah, let's jump. Who the fuck is doing this? Listen, I don't know who you are, but you better come out. Chaos Theory का sound design is amazing. Each track beautifully captures the intensity of sneaking around in dangerous place and feeling of being a spy. Also, just like enemy behavior, soundtrack also has different layers to it, depending on how aware the enemy is of your presence. Whether it be the fast-paced high-octane tracks for getting spotted, या फिर that slow horror vibe track for gaining enemy suspicion. In short, it kicks ass. I know कि तुमने से कई सारे लोगों ने मुझे इस गेम को काफी टाइम से कवर अप करने के लिए बोला था, and I am late. Extremely sorry for that. But hey, at least now I have played the game, and I can see why so many people love this and regard it to be one of the best stealth games ever made. Honestly speaking, a huge shout out to Nico for recommending this game. This game is almost perfect and absolutely worth playing for every stealth lover. And with all that in mind, I give this game a 9.